So now today we will start with a new chart type, which is my bar graph. Okay, Hmm. and I believe most of you must have heard this chart, or primarily must have built this chart, which is a bar graph. Now, if I ask you, जो भी आपको पता हो, when do we create a bar graph? किसी ने बनाया है? नहीं बनाया कभी बार का। Sesta, Shilpa, did you guys ever came across developing a bar graph? बनाया होगा लेकिन सर नाम से को नहीं पता हो कि ये बार ग्राफ है। ठीक है, ठीक है, cool. So primarily bar graph is used whenever we have to create a comparative view. ठीक है, जब भी हमें कंपैरेटिव व्यू बनाना मतलब शोकेस करना होता है, देन वी गो अहेड एंड क्रिएट अ बार ग्राफ. ठीक है, अब उस दिन हमने देखा था इन टैबलू वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल सेक्शन इज माय शो मी सेक्शन. ठीक है ना, बिकॉज प्राइमरली द मोमेंट यू सेलेक्ट एनी ऑफ द फील्ड्स हियर, यहाँ पर शो मी विल लेट यू नो कि विच ऑल ग्राफ्स आर पॉसिबल टू बी बिल्ड बेसिस द इनपुट्स व्हिच वी हैव सेलेक्टेड. ठीक है, फ्रॉम द डायमेंशंस एंड फ्रॉम द मेजर्स. कूल. अभी लेट्स से वी हैव टू बिल्ड अ बार ग्राफ. सिंपली आई विल टेक अ I will simply showcase the sales across different subcategories. So मैंने subcategory लिया and sales लिया. ठीक है. Now you see the moment we selected subcategory and sales, यहाँ पे इतने सारे चार्ट जो है वो enabled हो गए. Because primarily with respect to the inputs which we have selected, so these inputs are fulfilling the criteria for these different charts. जो मैंने उस दिन आपको बताया था, right? So the moment you hover over your cursor to any of the charts, at the bottom you will get to see कि हाँ, इस चार्ट को बनाने के लिए क्या प्री-रिक्विजिट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस एंड मेजर्स. तो अब हमने जो दो फील्ड यहाँ पे सेलेक्ट किया, सब कैटेगरी एंड सेल्स. सो फ्रॉम दिस टू inputs we can primarily build these all charts, of which bar graph is a recommended one. ठीक है, and also as you understand now the chart which you see inside a red box is primarily the chart which is the most recommended one. This is the Tableau ka inbuilt logic. Simple as you simply click on it and you will get to see a bar graph here. This is primarily a horizontal bar graph. ठीक है, wherein obviously your subcategory is in y-axis and the sales value is in x-axis. Now अगर हम इसको vertical बनाना हो तो very simple, we will have to transpose it or swap it. So primarily दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं. या तो आप मैनुअली क्या करोगे, सेल्स को रोज में लाओगे, सब कैटेगरी को कॉलम्स में ले जाओगे, और इन टैबलू दिस इज एन ऑप्शन which says swaps rows and columns. You simply click on this one and your horizontal bar changed into your vertical bars. So subcategory अब यहाँ पर आ गया in your x-axis and this y-axis is showing your sales value. ठीक है, so as per the requirement, obviously either of the way is okay. You can have a horizontal bar graph, you can have a vertical bar graph, but obviously as per the requirement, as per the ask from the end user या जो भी हमारा client है, we can go ahead and create this bar graph in Excel. अब ये comparative view कैसे बताता है? So very simple. If I simply take the sales and add to the label, so you now get to see हर एक सब कैटेगरी across sales क्या है. So comparative view इस तरीके से है ना कि in our data we are having total 17 subcategories, because obviously as per our understanding यहाँ पर obviously it showcase the unique number of data points. So 17 marks में 17 subcategories. So अगर आप इसको count करोगे तो these will be 17 bars. और इस पे क्या हो रहा है, एक कंपैरिजन बता रहा है कि ऑफ ऑल दीज क्विकली समवन कैन गो एंड से कि ऑफ ऑल दीज डिफरेंट सब कैटेगरीज as per the data available in order sheet of the sample superstore, for fasteners category is having the lowest sales value which is 3k, and this particular category is having the phones is having the maximum sales which is 330k. ठीक है, so this is a comparison wherein across different subcategories we are showcasing the sales value. Clear है? कोई question on to the bar graphs and how can you swap between horizontal and vertical bar graph? Guys, is this clear or not? सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे. एक्चुअली मैं दो स्क्रीन से आ रही थी तो मुझे पूरा एको हो रहा था आपका वॉइस, तो मैंने कट किया. तो एक बार जस्ट क्विक रिवीजन. Okay, ठीक है, cool, not a problem. So I was telling कि we will today जो we are going to read is about how to create a bar graph and when do we create a bar graph. So the bar graphs in the world of visualization are primarily used whenever we have to showcase a comparative view. ठीक है, and sorry, and in Tableau what we have seen
that show me section is the most useful section because the basis of our inputs, it let us know what all charts are being possible to made from the, let's suppose, the fields which you have selected. So for now, we just want to showcase the sales value across different subcategory. So I simply chose subcategory and I chose sales value. So the moment I selected these two fields, these all charts are being highlighted primarily because basis the inputs which you have selected, it's possible to make either of these charts. And as we read in our last session, अब इस इतने सारे charts में से the one which is inside the red box is the most recommended one. This is obviously basis the Tableau का inbuilt logic. So as we click on this one, you click on any of the charts. ठीक है, you click on pie will get enabled. You click on stacked will get enabled. But हाँ ठीक है, let's suppose अभी हमें को we have to create a bar graph. You simply click on this bar graph and we got the bar graph. अभी जो ये bar graph आया, so this is a horizontal bar graph, so because your subcategory is in y-axis and your sales is in x-axis. Now if you want to make it vertical bar graph, so very simple, all depends upon, ठीक है, हमने यहाँ पे गए and we clicked on show me और यहाँ पे से bar पे click किया and it came, मतलब यहाँ पर at the front, but हो क्या रहा है कि इस columns में sales value got added and rows onto subcategory got added, and obviously if you want to make it vertical you will have to transpose it, and to transport it there are two ways, either हम sales को manually rows पे लेके आए, subcategory से columns पे लेके आए, और quickly we can click on this swap rows and columns वाला, मतलब ये जो हमारा एक बटन होता है in Tableau. So the moment you click on this one, now you see your subcategory is onto the x-axis and your sales is onto the y-axis. So this is a primarily a bar graph. And obviously if we simply add the sales onto the label, so now you see across all the subcategories is letting us know what is the sales value. So and quickly someone can conclude that this particular subcategory fasteners is having the lowest sales value as per the data available in order sheet of my sample superstore, which is of 3k, and phone subcategory is having the maximum sales value, which is of 330k. So this is all about the bar graphs, how to make a horizontal or bar graph. It primarily depends upon the requirement or the taste of the end user है, जो भी आपका client है. But then this is obviously you can go ahead and create a bar graph wherein you will showcase a comparative view across a measure. Is this clear now to all? क्लियर है या फिर से रिपीट करूं? ओके, ठीक है. अब इसमें एक और चीज क्या होगा, so obviously if you see the graphs, the bars are, which is primarily 17 bars. Obviously if you count, this will be 17 bars. And then Tableau, good thing is it always at the leftmost bottom let us know what is the unique number of data points. So it's a 17 marks, so primarily 17 subcategories hai. Ab obviously view wise this is not something which is very intuitive, primarily because the graphs are not in a sequence. Okay, so now if you want to have them in a sequence, what you can do, you can obviously you can sort them. So obviously हर किसी tool में क्या होता है, whenever we want our data or we want our graphs to be in a sequence, we will have to sort them. We can obviously sort them in ascending order or in the descending order. अब to sort the data in Tableau, so these are the two quick buttons which are used. So one says ascending, obviously if you hover over your mouse it says ascending, and this one says descending. Simple है, by icon also you can see छोटा से बड़ा हो रहा है, this one from बड़ा to छोटा, right? So simply you click on this one, then now you see सबसे lowest वाला जो है it came at the first, so primarily ascending से descending हमारे bars जो sort हो गए. Eventually if you want to sort them in descending order, you click on this one and now your bars are being sorted from descending to ascending order. So this is how we can obviously have our visualization or view sorted in a sequence. Either we can do in ascending order or we can do it in descending order. Okay, and these are the quick ways of doing it. Simply click on these either of these two buttons and your graph will get sorted. Cool. I hope there is no question onto the bar graph. The question है? ठीक है. So the next graph is, which we will read, is about line charts. Now, any idea when do we create a line chart? The best case example. Primarily, obviously, you can use any of the data to create a line chart. Again, when do we? What is the best scenario to have a line chart in a visualization? Sometimes like profit देखने पे
कि इस ईयर कितना बढ़ा है या कितना घटा है, ऊपर नीचे जो आता है उसके लिए यूज कर सकते हैं। Correct. So you are trying to say whenever we have to say see a trend across, maybe it can be year, it can be day, week, any of the date fields, right? And it can be any of the measures. So that is the case. Whenever you have to see a historic trend across any of the measures, it can be your sales value, profit value, discount, or anything, and then your date fields can be your, obviously it can be year, it can be month, सर quarter, or वॉइस day. नहीं आ रही आपकी, आप वॉइस किसी को नहीं आ रही या अभिनव को नहीं आ आ रही रही? है सर, मुझे आ रही है। नहीं। ठीक है, अभी आ रही है अभिनव? हाँ जी सर, आप वॉइस। ठीक है, cool. So वही है कि मैं ये कह रहा था कि whenever across any of the date fields, so date field primarily it can be your year, month, quarter, day, and then you have to showcase a historic trend. Then is the best case scenario wherein we can go ahead and create a line chart in Tableau or any of the visualization tools. Now having said that, let's see. So we will take the order dates, ठीक है, and now let's see by on a yearly basis we are trying to showcase the profit value. ठीक है, so हमने order date लिया and profit लिया. Now let's see what show me section says. So eventually, since we have selected the date field as an input, so Tableau is also recommending us the chart type as a line chart. So ये देखो इतने सारे charts possible हैं, but Tableau is recommending the line chart because obviously Tableau also understands that whenever we have any date field, primarily line chart is the best chart using which we can show our visualization. अब in Tableau, guys, always remember होता क्या है. Eventually, if you go to our data and see our order dates, so यहाँ पर it's not like कि order date में you are having the yearly values, ठीक है. So here when you use the line chart, so 14 में ये profit है, 15 में ये है, 16 में ये है, 7. So primarily on a year basis, the profit value is increasing, ठीक है, as per the direction of this line chart or the trend. लेकिन obviously if you see the order date value, it's not कि यहाँ पर date क्या कहते हैं yearly values, it's the primarily the day values. होता क्या है in Tableau, whenever we use any of the date fields, Tableau always groups the date field at a parental node. Parental node क्या होगा? At a कोई भी डेट है, सबसे उसका parental सबसे top hierarchy क्या होगा? That is your year, ठीक है. Now let's suppose if you want to see your profit values by month, so you will simply you will have to click on this plus sign. अब होता क्या है, just to reiterate what I was trying to say, कि जब भी आप कोई भी डेट फील्ड को यूज करोगे ना, यू विल ऑलवेज गेट टू सी योर वैल्यूज grouped at the parental node or the top node, which is your year values. Now eventually if you want to see your values at the month level, you simply will have to click on this plus sign. The moment you click on this plus sign, so obviously year का क्या है, quarter, so now your values are getting spread across different quarters. 14 में obviously every year has 4 quarters, so on a quarterly basis now you are able to see what is the sales value, जिसमें पता चल रहा है वैसे 16 में quarter 4 में सबसे ज्यादा sales हुई है. Now eventually if you want to have it over month, simply click on this quarter, you will get to see the spread across, sorry, the profit values spread across your monthly basis पे. In 2014 में Q1 में Q1 will have 3 month values, Jan, Feb, March. के basis पे what is your profit values, ठीक है. So this is the case whenever you will use, just to summarize, whenever we use any of the date fields, our values always get grouped at the top hierarchy, which is my year node. Now obviously there is an option by means of which we can obviously see the visualization or have the visualization basis quarter, month or day. अब let's suppose there is a scenario wherein by year, by month we want to see the profit values. We do not need quarter because everyone knows Jan, Feb, March is Q1, April, May, June is Q2 and so on. अगर ऐसा कुछ होगा तो what you will have to, so simply the requirement is कि we want to see the view basis by month by year मेरा profit value क्या है, ठीक है, and we do not need the quarter. So very simple, you will take the quarter और उसको आप यहाँ से हटा दोगे, ठीक है. So मैंने क्या किया, इधर से वहां पर उसको लेके इधर ड्रैग कर दिया फील्ड्स की तरफ. So now you see हर ईयर के क्रॉस you are getting 12 primarily data points. That is the reason 12 into 4 is 48. So here Tableau is saying 48 marks. So yearly basis पे by month you are able to see कि let's suppose Jan 2014 में मेरा जो प्रॉफिट था समथिंग अराउंड 2.4 के था, वही जैन मान लो 2015 में -3 के था, ठीक है. So now yearly basis by month you will be able to
do a comparison and you will be able to see the trend. Quick question onto the line charts. Is it clear? ठीक है. Now since so this is primarily वही है जो मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि डेट फील्ड्स क्या होंगे. Tableau always groups them at the top node, parental node, which is a year value. Now the question comes, is there any way by means of which we can create hierarchy in Tableau? So एक तो हो गया कि ठीक है जो भी हमारे डेट फील्ड्स होंगे they always get grouped at the parental node, which is your year, and then obviously you can have them at the child node basis the requirement, quarter पे, month पे या day पे. ठीक है. So now let's suppose अब क्या है कि we have in our data we have the category and we have the subcategory. ठीक है. And then we are showcasing the sales value. ठीक है. So now a question to you guys, आप लोगों को बताना है कि first of all I need to create a view wherein I need to showcase the sales value by category and subcategory. Obviously there are categories like furniture, office supplies, technology in your data, and then for each of the categories there are certain subcategories. हमें एक व्यू बनाना है जो कि across different by category by subcategory we have to showcase the sales value. Now you guys need to tell me कि हम कॉलम्स में किसको ऐड करें और रोज पे कहाँ पे किसको ऐड करें. एनी आइडिया? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है ना, क्या करना चाह रहे हैं अपन? ऐसा तो नहीं मैं अपने आप को बस पढ़ा रहा हूँ, सारे लोग सो गए? नहीं सर. ठीक है. तो मैं बताओ कि बाय वी हैव टू शोकेस द सेल्स वैल्यू बाय कैटेगरी एंड बाय सब कैटेगरी. एनी आइडिया किसको कहाँ पे रखेंगे? हाउ कैन वी क्रिएट दिस व्यू? क्या हो गया? शांत लोग क्या सोच रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि मैं तो बताऊंगा ही? ओके फिर ठीक है. कूल. सर पाई चार्ट में हो सकता है क्या? पाई चार्ट क्यों बनाएंगे? पाई चार्ट में तो जब भी आप यूज करते हो यू सिंपली शोकेस परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ना, बाय सब कैटेगरी करोगे बाय कैटेगरी करोगे. So अभी के लिए सिंपल है ना, विल सिंपल टेक दी simply go ahead, we will take the category, we'll take the subcategory, let's say category subcategory, and we take the sales value. ठीक है. Now you go to show me, you click on this chart. ठीक है. And you swipe it. So ये देखो simple है. So you got your by category, obviously furniture, office supplies and technology are your three unique categories in your data, and then across each of these categories there are certain subcategories. Furniture में 4 है, and then obviously here is something around I believe 4 4 8 जो भी है 9 होंगे यहाँ पे. ठीक है. And then this all. Simply if you want to have the sales, you can add the sales onto the label, and this will showcase you the sales across each of the subcategories. ठीक है. Clear? Cool. ये clear है ना view? So primarily category is your क्या कहते हैं primary pane. So अब अगर हम simple अगर मैं category को हटा दूं तो अब ये simple by सब category आ रहे हैं. यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा सब category किस category का है. So simply if you wanted to have that level of information available in your visualization और in your chart कि ये पता चले कि हाँ फर्नीचर के ये 4 सब कैटेगरीज फर्नीचर के हैं, उसका क्या सेल्स है, फिर ऑफिस सप्लाईज वाले सब कैटेगरी का क्या सेल्स है टेक्नोलॉजी का, इसलिए हमने कैटेगरी को भी रखा है यहाँ पे. ठीक है. बट देन व्हाट विल हैपन, obviously the moment someone let's suppose category को हटाएगा then this will showcase the sales value by sub category, और किसी को सब कैटेगरी को हटाएगा तो it will showcase the sales value by category. अब क्या है what we want to do here primarily
कि वी वांट टू गिव यूजर एन ऑप्शन, ठीक है, कि अगर उनको कैटेगरी के बेसिस पे देखना है तो वो ऑब्वियसली दे कैन हैव इट एट दी पेरेंट नोड व्हिच इज कैटेगरी. Then eventually, if they want to further drill down this data or drill down this chart and they want to see the visualization by subcategory, तो वहां पर हमें उसको instead of dragging the field from here to subcategory, मतलब row, square, self और column cell, simply giving them an option. कि plus sign पे click करो, obviously your option, your view will get expanded at to subcategory. You click on the minus sign, your view will again get grouped at the category level. Primarily हम उसका यूजर इंटरफेस फ्रॉम इजी बनाना चाहते हैं, ठीक है, समथिंग विच इज इजी फॉर यूज टू समथिंग विच इज इजी टू यूज फॉर द एंड यूजर. उसके लिए क्या करना होगा, टू फुलफिल दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट यू विल हैव टू क्रिएट अ हायरार्की इन टैबलू, ठीक है, सो दैट ऑब्वियसली सो दैट ये ऑप्शंस हम एंड यूजर को दे सके. और गाइस ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम टैबलू में हायरार्की बनाते हैं ना, सो दोस फील्ड्स शुड बी इंटर रिलेटेड. सो प्राइमरली जैसे कैटेगरी सब कैटेगरी, इट मेक्स सेंस टू मेक अ hierarchy on to category and subcategory. यहाँ पे category आपका top node होगा and then subcategory उसके child node होंगे. But you can't build a hierarchy on category and country or country and or let's suppose state and subcategory, because इन दोनों का आपस में कोई relationship ही नहीं है. So primarily हम जब भी एक hierarchy बनाएंगे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, मतलब सिंपल है कि पेरेंट होगा, फिर चाइल्ड नोड्स उस पर डिपेंडेंट होंगे या उसमें कुछ रिलेशनशिप होगा, तभी आप हायरार्कीज बनाओगे. और वी कैन क्रिएट एन हायरार्की इन टैबलू. Now, how do we create a hierarchies? एक तो पहले समझ में आ गया कि जो ईयर जो डेट फील्ड्स है वो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट हमारा ग्रुप होते हैं एट द पेरेंट नोड व्हिच इज एट द ईयर लेवल, ईयर फील्ड. अब हमें अगर यहाँ पे हायरार्की बनानी है कैटेगरी एंड सब कैटेगरी को लेके, बट अभी क्या है, कैटेगरी सब कैटेगरी अलग अलग फील्ड्स है, ठीक है, तो वो हम कैसे बनाएंगे. सो सिंपल है, यू सिंपली क्लिक ऑन टू द पेरेंट नोड जो भी आपका फील्ड है, और हियर यू विल गेट टू सी एन ऑप्शन विच इज हायरार्की एंड क्रिएट हायरार्की, ठीक है. अब इसको सबसे पहले टैबलू पूछेगा कि हम जो हायरार्की बनाने जा रहे हैं उसको हम क्या नाम देना चाहते हैं. सो लेट्स सपोज वी सिंपली गिव इट अ नेम कमोडिटी, ठीक है, यू कैन गिव इट एनी ऑफ द नेम्स, ठीक. हमने इसको ओके किया. सो नाउ यू सी द चेंज इन टैबलू. जैसे ही हमने यहाँ पे एक कमोडिटी फील्ड एज हायरार्की प्लेस किया, सो नाउ यू सी यहाँ पर एक पेरेंट, एक तरीके से देखो दिस इज योर पेरेंट एंड देन योर चाइल्ड, एक तरीके का आइकन आ गया एंड यू गॉट अ कमोडिटी फील्ड जिसके अंदर ये कैटेगरी फील्ड जो है वो मैप हो गया. सो प्राइमरली we have created a hierarchy, और hierarchy जब भी create होंगे so these will always have this type of icon जो आपको भी दिख रहा है, एक parent वाला और simple उसका दो child nodes, ठीक. और what is the next step कि we want to have subcategory as a child node under the category field. उसके लिए very simple है, what you will have to do, you simply take the subcategory वाला जो field है आपका and you drag it and place it after the category. सो वेरी सिंपल, जब भी हमने एक तो पेरेंट जो फील्ड था उस पर गया, हायरार्की पे क्लिक किया, अब बाकी हमें जो भी फील्ड्स क्रिएट करने हैं ना, वी जस्ट हैव टू ड्रैग इट एंड प्लेस इट इन अ सीक्वेंस दी. बट देन वी हैव टू वेरी कॉशियस दैट द सीक्वेंस नीड्स टू बी करेक्ट. अगर हम सब कैटेगरी को पहले डाल देंगे कैटेगरी के, तो ऐसे द हायरार्की व्हिच यू विल गेट इज समथिंग व्हिच इज नॉट efficient, समथिंग व्हिच विल नॉट बी वेरी एफिशिएंट फॉर द एंड यूजर्स, ठीक है. अब देखो, अब इससे क्या बेनिफिट होगा. सो नाउ सिंपली यू टेक द कमोडिटी एंड एड इट टू द कॉलम्स. ये देखिए अभी आपका सिंपली बाय कैटेगरी ये हमें टोटल सेल्स वैल्यू दिखा रहा है. नाउ समवन वांट्स टू ड्रिल इट डाउन और हैव द व्यू ओवर द सब कैटेगरी. वेरी सिंपल, यहाँ से अब कुछ सब कुछ खत्म हो गया. सिंपली क्लिक ऑन दिस कैटेगरी फील्ड एंड योर व्यू गॉट एक्सपेंडेड ऑन टू द सब कैटेगरी, ठीक है. नाउ अगेन लेट्स से समवन जस्ट वांट्स टू सी इट ऑन टू द कैटेगरी, दे डू नॉट वांट टू हैव सब कैटेगरी. Simply click on this minus sign, you will again get grouped at the category level. So this is the usage of the hierarchy and how do we create a hierarchy in Tableau. Is this clear, guys? Yes, sir. ठीक है. अब इसी तरीके से let's say we want to create one more hierarchy wherein there are different geographical fields in our data, which is our country, state, region, and postal code. Let's say. Or city and postal code. Now we want to create a hierarchy which is location, which will have all these fields inside this hierarchy. ठीक है, वो हम कैसे करेंगे. So very simple, what you will do, आप you can go okay. And one more thing is कि अब जैसे मैंने अभी क्या किया था, I went to category वाले फील्ड पे मैंने hierarchy पे गया, फिर मैंने यहाँ से create hierarchy किया. और another way is how you can create a hierarchy is कि जो भी है, जैसे कि मान लो कंट्री है, सो कंट्री के साथ हम चाहते हैं स्टेट, फिर वी नीड दी सिटी एंड देन आई वांट दी पोस्टल कोड, ठीक है.
तो आप क्या कर सकते हो, आइदर यू कैन क्लिक ऑन टू द कंट्री, ठीक है, यू क्लिक ऑन टू द कंट्री, यू गो टू हायरार्की एंड से क्रिएट हायरार्की, और सिंपल है आप कंट्री फील्ड के जो नेक्स्ट फील्ड जो उसके अंदर आएगा, सो प्राइमरली कंट्री इज योर पेरेंट नोड, इसका चाइल्ड नोड क्या होगा, सो चाइल्ड नोड विल बी कंट्री का स्टेट, सो यू simply take the state and put it over the country. This is another way of creating a hierarchies. The moment you drag the field and put it over the parent field, so now you will say Tableau understand that we are trying to create an hierarchy. और वो कह रहा है create hierarchy. So by default Tableau उसको नाम दे रहा है country comma state. So let's suppose we give it a name location. ठीक है, so this is another way of creating a hierarchies in Tableau. You say okay, सब ये देखो यहाँ पर एक location का field का hierarchical field create हो गया with an parent child node icon and is having country and state. वही बता रहा था कि सीक्वेंस बिल्कुल सही होना चाहिए, देन वी नीड कंट्री स्टेट का, वी नीड द सिटी, ठीक है, सो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल टेक द सिटी एंड ड्रैग इट आफ्टर द स्टेट, समवन इफ समवन बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली इफ समवन पुट्स द सिटी बिफोर स्टेट, ठीक है, एंड आफ्टर कंट्री, तो जो हमें एंड आउटपुट मिलेगा दैट इज नॉट समथिंग व्हिच विल बी वेरी करेक्ट और राइट वे ऑफ यूजिंग इट. So while creating hierarchy, there's only thing which we have to, or only mandate which we have to be cautious. That sequence of fields needs to be correct. So country followed by state followed by city, and then you get the postal code and drag it after the city. ठीक है? So this underline field, let's underline lets you know कि वो field कहाँ पे अभी drag हो रहा है. So this is your locations which is having country, state, city, postal code. Now let's suppose quickly if हम उसको देखें, simply I take the location, add it onto the column. So now you see you got by country. Since your data is only having one country which is United States, इसलिए यहाँ पर US का एक data दिखा रहा है. Now let's suppose someone wants to have it the view spread by state, so ये state आ गया. Again by city, तो ये by city आ गया. हर state के अंदर जो जो cities है उसकी view आ गई. So this is, and then obviously we can obviously have them at the group them at the parent node as per the requirement. So these are the quick ways of creating a hierarchy. Either you can simply drag and drop, give it a name, or you can right click and go to hierarchy and create the hierarchy. Clear? Quick question? ठीक है. And I hope you guys are practicing it because obviously मैंने पहले भी नहीं बोला था, unless and you do not practice it at your end, hands-on experience नहीं आएगा, and then you won't gain much confidence. इसलिए make sure that after the session you do practice whatever is being taught. Okay, cool. Now, having said that, let me quickly take you to pie chart. ठीक है, guys, let's quickly rejoin. ठीक है, मैं call disconnect कर रहा हूँ. So let's quickly